motion in a vertical circle में हमने दो तीन चीजें निकाली हैं. Like minimum velocity required to complete the vertical circle and difference in tension between lowest and highest point tension at any point. तो फिर हम एक vertical circle consider करें. Of radius r. Body is moving in a vertical circle of radius r. At any instant, string makes an angle theta with the vertical. ये lowest point हो गया. इधर let the velocity be VL. इस point पे velocity V. जैसे जैसे body ऊपर आएगी velocity बढ़ेगी कम होगी. If body is moving in a vertical circle. बॉडी जैसे जैसे ऊपर आएगी तो स्पीड बढ़ेगी या कम होगी? अगर इस पॉइंट की हाइट h है, यहाँ पे स्पीड vl है, इधर स्पीड कितनी होगी वो कैसे निकालोगे? सो उसके लिए you can use conservation of energy. फोर्सेस मार्क करेंगे बॉडी पे. With mg acting downwards, इसके दो components. mg cos theta and mg sin theta. अब इसमें mg sin theta का रूल क्या है? वो कौन सी फोर्स है? टेंशन और mg cos theta का रूल क्या है? वैसे इन दोनों का जो रिजल्टेंट है T और mg cos theta का that provides the centripetal force and mg sin theta is the tangential force. So we say if at any instant string makes an angle theta vertical as shown, then resultant of tension and mg cos theta provides centripetal force. Centripetal force किस डायरेक्शन में एक्ट करेगी? Centripetal force inwards या outwards, radially inwards या radially outwards? Inwards. So T is greater than mg. T minus mg cos theta is the centripetal force. So you can say T is tension at any point becomes mg cos theta plus mv square बार. अब इसको अगर मैं इस ट्रायंगल को दोबारा बना दूं यहाँ पे इस फॉर्म में है ये एंगल थीटा, दिस इज r, दिस विल बी r cos theta. cos theta क्या हो जाएगा? cos theta की वैल्यू ये डिस्टेंस h है, r cos theta is r minus h, cos theta is r minus h by r. इस पॉइंट पे वेलोसिटी vl, इधर v, इसको रेफरेंस लेवल माना.
इधर काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी एल स्क्वायर, इधर काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर plus potential energy mgh. Conservation of energy implies half mdl square will be equals to mv square plus mgh. Also using conservation of energy. Or you can say v square is second and third को first में substitute कर दो. ये important derivation है, स्कूल के लिए रट लेना अच्छे से. Plus half mb square. यहाँ तक देखो clear है? So you can read this as आगे क्या आएगा? इसकी वैल्यू में से सब्स्टिट्यूट करें एम बी स्क्वायर बाय आर प्लस वी एल स्क्वायर माइनस 2gh. Attention at any point is m by r vl square plus gr minus 3gh. ये जनरल फॉर्मूला हो गया टेंशन का. अगर मेरे को लोएस्ट पॉइंट पे निकालनी है तो h की वैल्यू, तो लोएस्ट पॉइंट h is equals to 0. So tension at lowest point is and for highest point h is 2r. Tension at highest point is टेंशन ज्यादा है लोएस्ट पॉइंट पे या हाईएस्ट पॉइंट पे. टेंशन लोएस्ट पॉइंट पे, तो डिफरेंस इन टेंशन कितना आया? कॉमन तो आपको प्रूफ करना आता है that show that difference in tension between lowest and highest point is 6 times the weight of the body. Show that difference in tension between lowest and highest point is 6 times the weight.
देखते ही क्वेश्चन आपको स्कूल में आ सकता है. Difference in tension between lowest and highest point is 6 times the weight. Second other which should be the velocity at lowest point so that body is able to complete the vertical circle. Velocity at lowest point so that body is able to complete the vertical circle. And the concept is that body will complete the vertical circle if tension at highest point is greater than or equal to 0. Body will be able to complete. Vertical circle if tension at highest point तो 0 नहीं होनी चाहिए, so it should be greater than or equal to 0 we say. That means m by r so velocity should be, lowest point should be root 5 gr or more. So minimum velocity required at lowest point is root 5 gr. Thus root 5 gr at the lowest point. इसमें देखो इस सारे में कुछ पूछने वाला है तो क्लियर है. इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो. Next is conservative and non-conservative forces. Basically difference क्या होता है? Conservative force हम किसको बोलते हैं? Non-conservative force किसको बोलते हैं? We say that if work done to move an object
from one point to another depends only on the initial and final point and not on the path followed, then the force which is responsible is said to be conservative force. कि अगर वर्क डन बाय द फोर्स पाथ पे डिपेंड नहीं करता, सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है, तो फोर्स कंजर्वेटिव है. And if the work done by a force depends on the path followed, then we say that it's a non-conservative force. Importance ये है कि potential energy can be defined only if the force is a conservative. Because potential energy की जब भी derivation करेंगे, we will find the work done. कि work done to move a body from one point to another. तो अगर हम path dependent ले लेंगे work done को, तो different people will calculate the different work done depending on वो कौन सा path follow कर रहे हैं. तो हर कोई potential energy भी अलग निकाल लेगा. Because potential energy reference level पे depend करनी चाहिए initial और final point पे, not on the path followed. इसलिए potential energy define तभी होती है जब कंजर्वेटिव फोर्सेस है. तो डिफरेंस हम लिखेंगे कि कंजर्वेटिव फोर्सेस दो वे में इसको डिफाइन कर सकते हो. फर्स्ट इज वर्क डन बाय द फोर्स डिपेंड्स ऑन initial and final point and not on the path followed. And force is conservative. Or you can say that if work done and moving around a closed loop is zero. Second definition can be क्लोज लूप मतलब जहां से शुरू वहीं पे आ गए तो वर्क डन जीरो होगा. Then force is conservative. इसका मतलब ये है कि अगर हम A और B दो पॉइंट्स लेते हैं, we move from A to B, work done is WAB. You move from B to A through some other path, work done is WBA. If forces are conservative, then WAB plus WBA should be zero. If forces are conservative, then WAB plus WBA, or you can say work done to move from B to A is equal and opposite to work done to move from A to B. WBA is negative of WAB. So these forces are conservative. Example of conservative forces can be gravitational force, electrical force, are conservative. Magnetic force, normally conservative forces are सारी. इसके ऑपोजिट डेफिनेशन हम नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की कह देंगे. बट इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, पोटेंशियल एनर्जी कैन बी डिफाइंड ओनली फोर्स एज अ कंजर्वेटिव. Non-conservative forces are
Say if work done by a force depends on path followed. And second, if work done in moving around a closed loop is non-zero. Work done by a force depends on path followed and not on the initial and final points only. Normally damping force is non-conservative होती है, friction, viscosity, air resistance. Our second definition is work done by a force to move around a closed loop is non-zero. Same अगर मैं ऐसे ही बनाऊँ तो you can say A to B work done is WAB, B to A it's WBA. For non-conservative force, this is not equal to zero. Example is friction. For example, friction, air resistance, etc. or other damping forces. Non-conservative forces. यहाँ तक देखो ये क्लियर है. Then you have power. It's the rate at which work is done. Rate at which work is done or rate at which energy is spent. The rate at which energy is provided. So you can say power is rate of work done. Work done is F dot S. We say constant force X. You can also write F bar for differentiation से बाहर ले और ds by dt. In ds by dt is V. So power is F dot V. Units क्या हो जाएंगे power की? SI में joule per second and common name is watt. CGS में it's erg per second. And commonly used is horsepower. And 1 horsepower is 746 watt. And this is instantaneous power. Average power will be total work done upon total time taken. Delta W by delta T. Work done by human heart. The power of human heart. It's
say that work done per unit time. इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? We say that W's power is work done is PdV in time dt, so PdV by dt. The P denotes blood pressure. dV by dt is volume of blood flowing per unit time. SI में तो per second. Volume of blood flowing through heart per unit time. And अगर बॉडी सर्कुलर मोशन में मूव कर रही है, वर्क इज डन बाय टेंजेंशियल फोर्स और रेडियल फोर्स, दोनों में फर्क क्या है? When body is moving in circular path, work is done by tangential force or radial force. बॉडी अगर सर्कल में मूव कर रही है तो डायग्राम ऐसे बनेगा. At any instant body is at point P. इस पे अगर दो फोर्सेस लग रही हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स Fc, टेंजेंशियल फोर्स Ft. इस पॉइंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर टेंजेंट टू द पाथ. वर्क इज डन बाय व्हिच फोर्स, Fc और Ft? Tangential force, because centripetal force is perpendicular to displacement. Radial force never does any work. So body circle में move कर रही है तो tension का work done हमेशा zero आएगा. Body moves in circular path. Work is done only by tangential force. Radial forces at all points. Work done is zero. अब अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वर्क डन क्या होगा? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कौन सी थी? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में टेंजेंशियल फोर्स है जीरो, तो वर्क डन कितना हो जाएगा? Implies kinetic energy will remain constant. Because radial force work done करेगी नहीं, tangential force है नहीं, तो work done zero है, इसलिए change in kinetic energy भी zero है. ये कहाँ से आएगा? work done zero है तो change in kinetic energy भी zero है. That's from work energy equivalence. तो अगर वर्क डन जीरो है तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी जीरो ही आएगा. क्लियर है यहाँ तक ये दोनों चीजें?
So power is instantaneous power is F dot V. Average power is work done upon time. Power of human heart is P delta V. Delta V is volume of blood flowing through arteries per unit time. And circular motion है तो non uniform circular motion में work is done by tangential force and radial force does no work. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो टेंजेंशियल फोर्स है नहीं, सिर्फ रेडियल फोर्स है. रेडियल फोर्स कोई वर्क नहीं करती, इसलिए काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहेगी. इसमें देखो, इसमें कुछ है पूछने वाला तो This will do collisions next. यहाँ तक पढ़ के देख लो पहले, collisions करेंगे फिर इसके आगे.